Hello all, this is Ankita and today we are going to learn about symbolism. What does it mean? Who were the propagators? What were the major characteristics? What was the aim? All of these things we are going to learn in today's class. So let's begin. Why do poets not say things directly? Why use images like rose, night, darkness? Maybe because rose indicates love, darkness, death and despair. This indirect expression is what we call as symbolism. कोई चीज़ जब सीधे तरीके से ना प्रेजेंट करके एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रेजेंट की जाए उसको हम या कोई सिंबल के माध्यम से प्रेजेंट की जाए तो उसको हम सिंबॉलिज्म कहते हैं. जैसे रोज़ किस चीज़ का सिंबॉलिक है? लव का. तो वेरेवर यू विल सी रोज़ you will automatically get an idea that it is somewhere talking about love. Or whenever you will see darkness, you will automatically get an idea that it is either talking about horror or death or despair or something pessimistic. So this indirect expression is what in raw terms is called as symbolism. Now, symbolism is a literary movement in which writers use symbols, images and suggestions to express deeper meaning rather than direct statements. तो symbolism एक literary movement है जहाँ पे writers symbols का, images का और suggestions का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ या कोई deeper meaning convey करने के लिए rather than using direct statements. तो symbolism का key idea क्या हुआ? To suggest, not to state. अब ये जो सिंबॉलिज्म है ये लेट 19th सेंचुरी फ्रांस में डेवलप हुआ था और ये एक मूवमेंट था विच वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. I hope you're clear with the idea of what is realism and naturalism. If you have any doubt, we already have a video on the channel. You can go and seek help. So it developed in late 19th century France and was a reaction against realism and naturalism. Now, the key founders of symbolism were Charles Baudelaire in his work Les Fleurs du Mal. Here, the focus was on spirituality and inner experience. So, whenever we talk about symbolism, the major focus is on inner experience. It is a reaction against science. It opposed the idea of positivism and determinism, that everything is dominated or something, everything is directed by environment and heredity. तो symbolism ने इस idea को oppose किया. Symbolists believed the idea that truth is not scientific, rather mysterious, spiritual and subjective. तो जैसे कि determinist ने कहा था कि truth objective और scientific होती है, तो symbolist ने उनके against जाके कहा कि नहीं, truth scientific नहीं होती, truth mysterious होती है, ट्रूथ स्पिरिचुअल होती है और सब्जेक्टिव होती है. इन लोगों ने कहा एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रियल ट्रूथ, एवरीथिंग इज जस्ट अ सजेशन. Symbolists were influenced by mysticism. They showed interest in dreams, imaginations and inner reality. Reality is not what we see but what we feel and imagine. तो इन लोगों का मानना था कि रियलिटी वो नहीं होती जो हम देखते हैं, रियलिटी वो होती है जो हम फील करते हैं या जो हम इमेजिन करते हैं. तो इन लोगों ने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, रादर देन ऑन स्टैटिक रियलिटी, रादर देन ऑन ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक रियलिटी. इन लोगों ने मिस्टिसिज्म को चूज़ किया. Now let's look at the key characteristics of the age of symbolism. The first characteristic is the use of symbols. Of course, यहाँ पे there is nothing called as statements. Statements कुछ नहीं होते. Everything is a suggestion. So we use symbols here. Object represent deeper meanings. For example, rose represents love. Night represents death and mystery. Then there is suggestiveness. Meaning is indirect. Readers must interpret. तो यहाँ पर the role of reader is एक्टिव. यहाँ पे रीडर को बहुत स्कोप मिलता है इंटरप्रेट करने का. देयर इज अ ओपन इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स बिकॉज द मीनिंग इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, इट इज इन फैक्ट स्टेटेड इनडायरेक्टली. नाउ टॉकिंग अबाउट म्यूजिकलिटी, पोइट्री इज लाइक म्यूजिक,
rhythm, sound, repetition, all of these things stand important. Subjectivity, focus is on inner emotions and personal experience. Focus किस पे है? Inner emotions पे और personal experience पे focus है हमारा. Then mysticism and spirituality deals with dream, unseen reality and supernatural. जो हमारा फोकस है वो ड्रीम्स पे होता है, अनसीन रियलिटी पे होता है और सुपर नेचुरल पे होता है. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होती है या फिर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, राइट, उनको निगेट कर दिया जाता है. क्या इंपॉर्टेंट है? ड्रीम्स, अनसीन रियलिटी और सुपर नेचुरल इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ डायरेक्ट स्टेटमेंट, नो क्लियर मैसेज, मीनिंग इज हिडन एंड सिम्बॉलिक. I hope you're clear with the characteristics of the age. What did it intended? What did it oppose? What were the major propagation that it was trying to do? Now let's look at the major writers. They were Charles Baudelaire, then Stephen Mallarmé, then Paul Verlaine, Arthur Rimbaud and W.B. Yeats. W.B. Yeats एक major writer है, सिम्बॉलिक राइटर है. और इसने आगे कौन सा मूवमेंट प्रोपोगेट किया था? इमेजिज्म. इमेजिज्म से भी एसोसिएटेड था ये कहीं ना कहीं. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्बॉलिज्म and realism or naturalism. So when you talk about symbolism, the meaning is indirect, whereas in naturalism or realism, the meaning is direct. Here the focus is the inner world, matlab the subjective reality is the focus. Whereas when we talk about realism or naturalism, it is the external world and the objective reality. We talk about symbols here. Here it is observations. Here this is experimentations. Here the world is mystical. We believe in metaphysics. We believe in transcendental. Here everything is scientific. The difference, I hope, is clear to you, and how symbolism was against the idea of realism and naturalism. Symbolism creates mystery, depth, and beauty. It makes literature open-ended and interpretative. Symbolism marks a shift from external reality to inner experience. ये एक शिफ्ट है किससे? एक्सटर्नल रियलिटी से इनर एक्सपीरियंस. यहाँ पे इनर एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है. एम्फसाइजिंग ऑन सजेशंस, इमेजिनेशन एंड मिस्टीरियस डेप्थ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. किस पे ज़्यादा फोकस करता है? सजेशन पे, इमेजिनेशन पे और मिस्टीरियस डेप्थ पे ज़्यादा फोकस करता है. Thus, symbolism rejects scientific objectivity, direct representation, and instead celebrates the power of symbols and suggestive language to reveal deeper subjective truth of human existence. Symbolism transforms literature into an art of suggestion rather than statement. यहाँ पे suggestions are important, not statements. It explores the unseen and the unspoken thoughts of symbols and imaginations. Symbolism paved the way for modernist experimentation by liberating literature from realism. Symbolism teaches us that the truth is not always visible. It must be felt, imagined, and interpreted beneath the surface of words. I hope this idea of symbolism, कैसे इसके लिए internal experience, internal reality ज़्यादा मैटर करती है, कैसे इसके लिए मिस्टीरियस डेप्थ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस ज़्यादा मैटर करते हैं, कैसे जब हम सिम्बॉलिज्म की बात करते हैं तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट थिंग्स मैटर ज़्यादा नहीं करती जितनी ज़्यादा सिम्बॉलिक, सजेस्टिव, डीपर मीनिंग्स, सब्जेक्टिव ट्रूथ मैटर करते हैं. यहाँ पे हम कहते हैं लिटरेचर एक ओपन एंडेड सेलिब्रेशन है जहाँ पे हमारा रीडर जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ही हैज़ अ स्कोप ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. सो it is symbolism which paved way to modernist experimentation. It paved way to modernist literature. It paved way to focus on what was felt and imagined. It basically tried to help us understand or interpret the surface of words. I hope now this idea of symbolism, how is it different from naturalism and realism, what are the characteristics, who are the major people who propagated this idea is clear to you. Thank you.